Assalamu alaikum and a good afternoon to everyone. I welcome you all again to another very exciting episode of Center for Private Sector Engagement CPSE podcast. इस podcast का मकसद जो है वो उन experts को इकट्ठा करना है एक प्लेटफॉर्म पे जो हमें ये बता सकें कि कारोबार करने के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह हल किया जा रहा है, और इस वक्त कारोबार करने के हवाले से जो सहूलियत मैसर है आया वो काफ़ी है या नहीं। आज की नशिस्त में हम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा सरवर साहिबा, हु इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। मैडम की बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, और इस हवाले से वो काफ़ी रिसर्च भी करती हैं और हम अब गाय बगाए STPI को भी इस हवाले से गाइड करती रहती हैं वेयर एवर वी नीड हर एक्सपर्टीज। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज क्योंकि चूँकि हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसमें बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ फॉर द एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड द बिजनेस कम्युनिटी। तो जब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें कारोबार करने वाले लोगों को बहुत सारे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। ये बिल्कुल सच है कि इस वक्त गवर्नमेंट मौजूदा जो है और इससे पहले भी जो थी वो रेगुलेटरी बर्डन को कम करने के लिए, कारोबार को मजीद आसान करने के लिए बहुत सारे इकदाम और स्टेप्स लेते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देर आर लूप होल्स, देर आर फ्लॉज जिसको ओवरकम करने के लिए हमेशा हमारे पास एक्सपर्ट्स जैसा कि आप हैं हमेशा गाइड किया है हाउ टू मेक थिंग्स इजी। तो आज की जो नशिस्त है इसमें हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम आपसे रहनुमाई भी चाह रहे होंगे और हम आपसे दरख्वास्त कर रहे होंगे कि हमें थोड़ा सा इसमें आगाह भी कर सकें कि इस वक्त मौजूदा उस चीज़ पे क्या काम हो रहा है। तो उन कुछ सवालात जो हमारे पास हैं जो जिन पे हम आपसे गुफ्तगू भी कर रहे होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उनसे आगाज़ करना चाहूँगा। अब जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की हम बात करते हैं ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स और एक डायनामिक फील्ड है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद देयर आर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो कि एक बिजनेस को फेस करना पड़ता है व्हेन दे आर एंगेजिंग इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो इस पे आप हमें थोड़ा सा आगाह कर सकें कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो कारोबार करने वाले लोगों को पेश आते हैं। First of all, thank you so much, Abdullah, for giving me this chance to exchange my views on this very important topic here today. Yes, this is very true that cross-border trade is going to be a new window this time for Pakistan and many developing countries as well. हम सब already trade में कहीं ना कहीं well knitted हैं और ये process ongoing है जो चलता रहता है. It has some kind of challenges alongside with many, or you can say immense opportunities for various stakeholders like business class traders and our young startups, startup doing entrepreneurs as well. The important thing is how to make this path to development more easier, more convenient, more resilient for all these stakeholders at this point of time. In this regard, major issues which we are facing or which we can face in case of cross-border trade is about the logistics, first of all, which is very important thing in case of developing countries like Pakistan. And on the other side, which we are already facing about the cumbersome documentation, जो कि बहुत से stakeholders जो हैं और business doers जो हैं बहुत दफ़ा इस point को raise कर चुके हैं. And thirdly, the most important is about the payments. This is also one of the most important issue in this regard. तो अगर हम बात करते हैं, if I start from logistics in case of cross-border trade, तो यहाँ पे हम various aspects को भी open कर सकते हैं. For example, अगर हम चाहते हैं, let's see if we take the example of Iran, Pakistan or Afghanistan, Turkmen border vis-a-vis Pakistan, then we can see various options here for trading between these two countries in taking into consideration the logistic point of view. For example, अगर logistics को हम bifurcate करते हैं in 2 points, one is cross-border shipping and the other is localized fulfillment. This is very good thing. जो कि अभी तक
हाईली फोकस नहीं है, जिसको अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे फोकस नहीं किया गया बाय दी policy makers openly towards the entrepreneurs or business doers so that they can make the benefit out of these two options equally. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम क्रॉस बॉर्डर शिपिंग की बात करते हैं then we have to face huge cost as well. This is very difficult because there is exchange of many hands for the delivery of one item to the destination point. But अगर हम बात करते हैं fulfillment की, localized fulfillment की, तो यहाँ पे हम inventory stock की बात करते हैं at the same place where we want to deliver the product which is being ordered by someone from a specific company or brand. So these are the most important two options in my point, in my view, that how can we benefit out of these two, considering or taking into consideration the pros and cons of both of these for Pakistan and in case of cross-border trade at this point of time. On the other side, अगर हम payments की बात करते हैं, पाकिस्तान में SCCP और स्टेट बैंक ने इस पे ऑलरेडी बहुत काम किया है, but much is to do further on in this regard. For example, अगर हम VBOC की बात करते हैं तो इसमें हम डिजिटलाइजेशन का एस्पेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी को इन्वॉल्व करते हुए बहुत सी चीज़ें लोकली वे में सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है. डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव को भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो उस सिलसिले में भी हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बट स्टिल देयर इज़ मच टू डू इन दिस जर्नी एज वेल. डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हुए हम देखते हैं रोल ऑफ सिंगल विंडो इन फॉर प्रमोटिंग द ट्रेड फॉर द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन हियर, just to reduce these kind of regulatory bindings towards them with respect to customs, with respect to product licensing and so on in this journey. So काम तो बहुत किया गया है, but the thing is adaptability is still lacking somewhere, either in the mature business class people or either the people who are just entering into the businesses, or we can say then that they are the new entrants but they are not having the proper know-how about how to move on so smoothly in this path. और ये स्मूथ वे में कैसे आगे फॉरवर्ड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग द नो हाउ अबाउट द प्रोसीजर्स एंड रूल्स prescribed by the different agencies, different regulatory bodies. इसका तरीका ये है कि हम इसको publicize करें openly with the help of different campaigns. This is one of the most friendly way to equip our young, our mature business people who have capital, who have skills, but they are just in this mood to avoid these kind of interactions on different grounds with such people, which are just for them the wastage of time. And that's why we can see that regulations in these regards are lacking, and documentation somehow is missing, which is not facilitating towards the economy. Thank you very much, Dr. Saima. आपने बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया. जब आप ये बात कर रही हैं कि ऑब्स्टिकल्स की जब आप बात करते हैं तो जो ईज ऑफ डूइंग अ बिजनेस है वो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, खासकर अगर हम देखें एक्सपोर्ट सेक्टर को, इंपोर्ट सेक्टर को, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड खासकर जहाँ पर आपने अभी तवज्जो मरकूज करवाई है लॉजिस्टिक साइड को. देयर आर मेनी इम्प्लिकेशंस व्हेन इट कम्स टू ट्रेडर्स, और one window operation is the solution, no doubt, and we also need to look into skill building की तरफ हमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है. जैसा कि आपने फरमाया कि digitalization is also an opportunity and is also an option. तो हमने जो कुछ पिछले 2 दहाई से हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी स्पीडीली जो है वो उठ रही है. You may see rise of the digital technologies in various sectors. तो आप के तजर्बे में आप कैसे देखती हैं कि डिजिटलाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा यही चैलेंजेस जो आपने अभी जिक्र किया है, इनको ओवरकम करने के लिए बिजनेसेस को इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज
जो सबसे important tool है हमारे पास, it's the ICT. It's the big leveler at this stage. और ये कैसे इन तमाम hazards को reduce करता है? It's the reducing of, or you can say the reduction of time, compliance time with the help of this ICT technology. Compliance is the most important aspect. Compliance of the regulations is the most important aspect when we are about to calculate the doing business index for specific country. अगर हम पाकिस्तान के perspective में देखें जी, Pakistan is improving on this time for 2022. पाकिस्तान ने 22 units जो हैं upward movement show की है. It's 108 at the point of 108 out of 190 nations. This is a good or healthy sign. और इसका जो credit है वो हमारे digitalization of the economy को ही जाता है, because in the last 4 years specifically we have done a lot in this regard. आप देख सकते हैं कि not only at the national level but rather at the Punjab level we have opened various business incubation centers as well, just to promote these kind of skills with the businessmen, with the new startup doers, so that they could have these kind of technicalities, how to deal with the procedures and rules of businesses in which they are going to involve themselves. अब ये reduce जो hazards है और जो हमारे तमाम obstacles हैं कितने हद तक इस technology से reduce होते हैं, उसमें सबसे important तो यही है कि हम transparency लेकर आ सकते हैं, where the money was being spent and how it was being and when it was being taken away by the business person. इस तरह से उसका जो है confidence and trust level जो है वो build होता है. And business can only flourish if the investor is having its own confidence and trust on the system, on the regulatory bodies of that specific political or economic system. अगर हम digitalization को promote करते हैं, and with the help of digitalization we are able to secure this confidence and trust level of the businessmen, then it means definitely we will be able to enhance our cross-border trade, not only our cross-border trade, बल्कि हम अपने जो multilateral trading system को promote किए हैं इस वक्त तक, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप better situation observe कर सकते हैं. So the thing how ICT is going to promote business, this is because of the reduction in the time of compliances, bringing transparency into the system, and giving more trust and confidence to the investor that their money is not going to be wasted in other few hands which are not being, or which are just under the table and which are not seen to anyone else. Rather, it's going to the government side and they are going to make more facilitations on the behalf of this money. So this is the most important thing, and this is actually the most important obstacle for the businessmen as well. That's why they have always been hesitant in case of Pakistan's economy just to invest in this environment, in this political setup. That's why we are we can say that Pakistan is short of many such kind of investment from the other side of the countries as well, that just because of the lack of these kind of issues. Thank you, Dr. Saima. आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पहली चीज़ that is to look into the trust level of the investors, because private sector, जब तक आप private sector को confidence में नहीं लेंगे तब तक आप flourish नहीं कर सकते. Plus digitalization will indeed result in transparency and compliances as well. मैडम, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इस वक्त क्या देखती हैं कि हमारा जो बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है और आप उसको रेट किस तरह करेंगे? Yes, if it's about rating of the regulatory system of Pakistan or regulatory environment of Pakistan towards business, it's now moving towards a conducive environment, right? जो सिचुएशन हम आज से 10 साल पहले सुनते आए और देखते आए, और जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा एक स्टैग्नेशन इस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूवमेंट टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर हमने ऑब्जर्व किया. आज हम
जो है उस स्टेग्नेशन से एटलीस्ट बाहर आ चुके हैं. इट्स नाउ अबाउट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. नाउ आवर इन्वेस्टर इज मोर विलिंग टू इन्वेस्ट हियर, चाहे वो यहाँ का है, चाहे वो वहाँ इट्स कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड side, but it's all now about the definition or defining the rules and regulation in a proper way. Rules हैं हमारे पास. For example, if we talk about the ease created by the ICT और technology की बात करते हैं, digitalization की बात करते हैं, but I'm always aware about the other side of this technology and technological base as well, because हम फिर cyber laws की definition की तरफ भी हमें जाना है. And unfortunately, Pakistan is having just one or two these kind of laws which are defining such kind of crimes when people are into this business activity. तो जब हम इस तरह के laws को define नहीं करेंगे, जब इस तरह के laws को हम introduce नहीं करेंगे, तो definitely environment अगर conducive होता भी है तो वो sustain नहीं कर पाएगा. So this is very important thing. To make environment conducive is not the ultimate object. आज हम उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे हमें इसको सस्टेन भी करना है, और ये सस्टेनेंस जो है इस कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस और अनटिल हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप करें, इंट्रोड्यूस करें टू द इन्वेस्टर साइड, टू द बिजनेस क्लास, फॉर द बिजनेस क्लास एक्चुअली, जो कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्रिएट कर सके और वो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी को अपने लिए प्रॉब्लम ना समझें, और वो ये ना सोचें कि इस एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से दैट विल ब्रिंग मोर हेजर्ड्स फॉर देयर बिजनेसेस, जो कि आज तक यही सोचा जाता रहा बिकॉज ऑफ द मिसिंग लॉज ऑन दी साइट्स, जिसको आप साइबर लॉज कहते हैं. जितना हम वो डेवलप करेंगे उतना ही आपकी जो इन्वायरमेंट है दैट विल बी मोर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट साइड. So this is the reason that digitalization जो है it's doing well on the behalf of the introduction of new concepts of trading, B2B, B2C, and C2C. These are the new variants of the trade which have been made more easy with the help of technology. State Bank of Pakistan has also done a lot in this regard, how to make payment easy to these kind of businesses for all segments of the societies who are into various sectoral sort of businesses. But even then, this cannot sustain until or unless we have proper rules and regulations in the system. जब वो rules define होंगे, उनको publicize किया जाएगा towards the adoption of the technology, then ultimately this solution towards the removal of misinformation, the removal of the corruption will be more conducive towards the development. तो जब तक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, हम यही कहते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है it was asymmetry. Information was not provided to the both of the sides of the stakeholders. So the basic purpose of the technology is to make people well equipped, and the process must be faster, and this can only be done if they have fulfilled all the other requirements or the provisions they have on these sites as well. ने बिल्कुल बजा फरमाया कि डिजिटलाइजेशन नो डाउट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड डिजिटलाइजेशन आने से ना सिर्फ करप्शन का इंडेक्स कम होगा, बट इट आल्सो विल रिजल्ट इन ईज ऑफ डूइंग अ बिजनेस फॉर the investors and particularly the business community. दूसरी तरफ I believe कि ease of doing a business की जब आप बात करते हैं तो फिर आपका regulatory burden जो है उसको कम करना पड़ता है, and that only is possible via public private dialogues, जहाँ पर आप private sector को ज़रूर engaged रखें, जो वो अपने issues को highlight करें जिससे उनके मामलात को मज़ीद बेहतर किया जाए. B2B and B2C is something that where we have to look into. But keeping in view the current situation, G2G is also something that the government also looking into, जिससे शायद हमारे लिए investment के more opportunities खुल रही हों. Thank you very much, ma'am, for your kind feedback. Just last question for today's podcast. आप क्या देखते हैं कि how policymakers and academia can play a very important role in adoption of the digitalization for cross-border trade? Right. This
is very important. Another important question, rather I must say. Policy makers की जब बात करते हैं जी, तो this is all about the government side or the stakeholders involved in the process of making policy. It involves various interest groups as well, other than the political parties, agenda, and so on. तो इसमें हम अगर उनका रोल देखते हैं तो वो यही है कि how much they are focusing on the development of the sector ICT, ठीक है जी. और उस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट जितनी भी वो गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी, डेफिनेटली इट मींस दे आर गोइंग टू क्रिएट ईज फॉर द सिस्टम. उसको स्मूथ बनाने की जो कोशिश है वो ज़्यादा बढ़ाती जाती है. और अगर इस सेक्टर को हम प्रमोट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली इट in other way rounds, it means that we are not going to further ease, going to create further ease for the other sectors of the country which have involved ICT within itself. तो पॉलिसी मेकर्स का तो जी मकसद यहाँ पे ये होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले हाईलाइट किया, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एग्जांपल इन दिस रिगार्ड. इसी तरह से फैब लैब्स भी बहुत यूनिवर्सिटीज में ओपन की गई हैं. डिजिटली फैब्रिकेटेड लेबोरेटरीज होती हैं, इसमें हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स, फॉर दोज न्यू स्टार्टअप डूअर्स जो कि इंटेंशंस रखते हैं जस्ट टू एंटर इनटू द बिजनेसेस. So these kind of investments are very important, not only at the provincial level but at the national level, because if these are to be included into the national agenda, definitely the emphasis being put upon these concerns will be more as compared to the those kind of focus being generated at the local level, at the provincial or state level. तो ये है जी पॉलिसी मेकर्स का रोल यहाँ पे कि जस्ट टू स्पेयर मोर part of the budget, more big chunk of the budget for the development of ICT sector in this regard, and then give more attention towards the creation of skills which involve the digital skills specifically. जैसे कि इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि आजकल बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस तरह की स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द बिजनेस डूअर्स, दैट हाउ टू यूज दीज एप्स जो कि हम एंड्रॉयड एप्स होती हैं उसको यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस पर्पसेस. और यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करती चलूँ कि जितना आईसीटी का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे विमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उतना जो है ऑन द अदर साइड दैट विल बी नॉट ग्रेटर इम्पैक्ट. उसकी वजह ये है कि दीज women comprise of a big segment of our society and they cannot go from one place to the other place quite easily. So they make the use of this technology for bordering their trade from one place to the other place. So this is something we have to focus on ICT at the national level. इस sector को promote करना होगा. So that's why in other way around we will be able to get the maximum benefit out of the cross-border trade, because बहुत potential है इस वक्त जो borders हमने open किए हैं for the trade purpose. वहाँ पे हमारे not only mature business people के लिए, rather जो कि startup ये बैठे हैं या उसकी intention रखते हैं उन लोगों के लिए. And already पाकिस्तान जो है अपनी e-commerce policy पे काम कर रहा है और that is going to be an other boost for such kind of interaction at borders. और thirdly, जितना हम startups को introduce करेंगे domestically at this stage, उतना और उनको हम promote करेंगे for cross border trading, वो हमारे लिए जो feedback लेकर आएंगे कि what kind of challenges they faced actually and what is to be done on this behalf, this will be more appropriate suggestion for the government of Pakistan or for us to coordinate or to integrate our system accordingly with those issues जो कि हमने जिनका हल निकालना है domestically. तो इस टाइम में हमें सबसे पहले स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा और स्टार्टअप्स के लिए हमने फिर आईसीटी को फोकस करना है. और अगर स्टार्टअप्स की बात होती है तो इससे एक स्टेप बैक हमने माइक्रो फाइनेंसिंग को भी
जो है वो प्रमोट पे फोकस करना है। और इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एट ड्यूरिंग एवरी बजट। हम देखते हैं कोई ना कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होता है, बट अगेन keeping in view the rising rate of population, we can see these are not enough measures. So microfinance start karte hue, then promoting the startups, and then following ICT reforms, we can do a lot in this regard to promote cross-border trade. So this is my suggestion at this moment, that अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स जो हैं आईसीटी को यूटिलाइज करते हुए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को मजीद एनहांस कर सकते हैं और क्या रोल एकेडेमिया का होना चाहिए. So this is my suggestion on the part of the policy maker. So if I talk about academia, वो हम ऑलरेडी जो है बच्चों को एजुकेट करते हैं about the skills, about the ways, methodologies, that how to do something when you are in field. But practically, the environment, the prevail of the environment is the duty of the government, how to nourish their minds then afterwards. और इस सिलसिले में as I have mentioned, incubation centers can play their role in a very good way. And similarly, there must be some other sort of institutes which can give them these kind of opportunities, that how to interact with or at these kind of forums, so that they could know their possible opportunities or possible hazards they can face at the border trade. So this is something, and being the academician, I know on my part that what we are doing, but somehow we find an issue, that is the academia industry linkage, which is actually not properly taken care by any of the government so far. No doubt, Chamber of Commerce and these kind of institutes or organizations are trying to focus on these challenges जो कि हम face कर रहे हैं. When the graduate enters into the market, they are not having proper skills, but they are expected actually. तो वो linkage अगर हम develop करते हैं, so this can also be a way forward in this regard. If we want to equip ICT with the education we provide at the educational institution. So this is something which we can do, and which the policymakers have the option to do further in this regard. And then we can have better result overall. Thank you, Dr. Saima. You've rightly pointed that there is a dire need to look into the academia industry linkage, which will not only result in empowering the incubation centers, but also will result in creating a bulk of young startups who will be able to contribute towards the cross-border and also towards the GDP of the country. Thank you very much, madam, for joining us. It was very insightful and very informative to talk to you, and I hope it would be the same for the audience. Thank you very much, you all, for joining us. Stay tuned for another episode.